हाँ जी, ये सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग elevation boiling point. What elevation in boiling point of alcohol is to be expected when 5 gram of urea are dissolved in 75 gram of alcohol? Kb for alcohol is 1.15 degree Celsius per molar. So in this case we have to calculate delta Tb. Okay. And what we are given, mass of solute W is given 5 gram. I am writing in short, mass of solute, that is urea, is 5 gram. Mass of solvent, that is alcohol, 75 gram. Kb for alcohol is 1.15 degrees Celsius per molar. And molecular mass of urea is, that is 60 gram per mole. These things are given to us. So we can apply direct formula. Delta Tb is equal to small w into Kb into 1000 divided by capital M into capital W. So mass of solute, that is 5 gram into Kb 1.15 into 1000 divided by mass, that is 60 into 75. So in this way we can calculate delta T. Delta Tb, what elevation boiling point is observed? It is 1.68. It comes out to be 1.28 degrees Celsius. You have to confirm that this is correct answer or not. Just you can solve it. Okay. This is the second question. One more question we can try on dissolving. बोलो जरूर जब पॉज करते चलो. Yes, third is question on dissolving 3.24 gram of sulfur, it is sulfur, in 40 gram of benzene, the boiling point of solution was higher than that of benzene by 0.81 Kelvin. Molar elevation constant for benzene Kb is 2.53 Kelvin kg per mole, and calculate the molecular formula of sulfur. While atomic mass is given, that is 32 gram per mole. So we have to calculate molecular formula. So we should understand कि molecular formula can be calculated just by knowing the molecular mass. It means हमें पहले molecular mass calculate करना है. So we have to calculate molecular mass of sulfur is to be calculated. Okay. Now mass of solute, that is W, is given to us 3.24 gram. Mass of solvent, capital W, that is 40 gram. Boiling point of solution was higher than that of it. This means, it means elevation boiling point is given to us. Boiling point of solution was higher than that of benzene by 0.81. That is the elevation boiling point. यानी कि boiling point इतना हायर हो गया, इतना एलिवेट कर गया, तो 8.81 Kelvin. And Kb is given to us, that is the 2.53 Kelvin kg per mole. So we have to calculate molecular mass of sulfur, that is capital M. तो हम कैसे रिलेशन लिखेंगे? वही डेल्टा Tb इक्वल टू स्मॉल w इंटू Kb इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल W इंटू कैपिटल M. हमें ये क्वेश्चन मार्क, ये हमें पता है, ये भी पता है, ये पता है, ये सारी चीजें हमें पता है, हमें अभी निकालना है. सो M वैल्यू विल बी इक्वल टू, तो W कितना है? W है आपके पास 3.24, Kb की वैल्यू है 2.53 इंटू 1000 और डेल्टा Tb नीचे आ जाएगा, दैट इज 0.81 और M यहाँ पे चला गया, W कैपिटल W 40. So its value comes out to be around 256. Its value, exact value is, that is 253. I am sorry, 253. ये 253 आएगा ग्राम पर मोल. This is the molecular mass and we have to calculate molecular formula.
atomic mass is given to us. So what is the relationship between molecular mass and molecular formula? So molecular formula can be written when we understand that how many atoms of sulfur present in 1 mole of sulfur. 1 mole of sulfur molecule. सल्फर के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम प्रेजेंट हैं, तो दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. बिकॉज यू नो द मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफाइंड एज द फार्मूला व्हिच डिटरमाइंस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल. और यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या सल्फर है, तो सल्फर के हमें एटम कैलकुलेट करने पड़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए. सो हमें कैलकुलेट क्या करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला. उसके लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम. तो नंबर ऑफ एटम्स हमें चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर इन ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर. सो मॉलिक्यूलर मास 253 एंड डिवाइड बाय 32. हमने क्या किया? मॉलिक्यूलर मास को एटॉमिक मास से डिवाइड किया. तो इन दिस वे यू विल गेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, और ये अप्रॉक्सीमेट आएगा यहाँ पे लगभग 8. So it means molecular formula, number of atom of sulfur in a molecule of sulfur is 8. So molecular formula will be as 8. This is the molecular formula. और इसी को हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, number of atom in a molecule of sulfur, that is known as atomicity. एक वर्ड यूज हुआ atomicity. Atomicity क्या है? किसी मॉलिक्यूल के उसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर. सॉरी, दैट इज एटॉमिसिटी. ओके.